कॉम्प्लेक्सेशन इनिशिएशन, एक है प्रोटीन इनिशिएशन। तो प्रोटीन इनिशिएशन रिलेटेड टू bringing cephalosporin belongs to that same group. This is not mine. Same group as we were discussing for beta lactam, and they are meant for inhibition of cell wall synthesis. They follow that same mechanism related to competitively antagonize transpeptidase enzyme, which is responsible to give cross linkage of D-alanine of NAM one above the other, so that cell wall integrity can be enhanced. But if that is being competitively antagonized by cephalosporin, it means this transpeptidase enzyme is not available for cross linkage of D-alanine versus D-alanine of NAM. So it means those cell wall architecture integrity will become weak, and cell become ruptured due to internal osmotic pressure. बैक्टीरिया का जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आम सेल से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आम जो सेल है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरनली कम होता है, बाहर ज्यादा होता है। बैक्टीरिया का काम फिर उल्टा है, वो चूंकि आपने कहा ना कि उसकी जो इंटरनल ऑस्मोलरिटी है वो ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से वो फिर अगर उसका सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वीक हो तो फिर वो उसको retain नहीं कर जाता। Similarly case over here, cell wall if that is weak because of lesser integrity, if that because of that inhibition of cross linkage of NAM, it means that cell wall is more prone for rupturing because of high internal osmolarity of that bacteria cell. तो ये cephalosporin है। अच्छा, cephalosporin के फिर हमने 5 क्लासिफिकेशन की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, and those generation were related to their spectrum of activity. Spectrum of activity was first, second, third, and fourth and fifth. Fourth and fifth have got broad most spectrum of activity as compared to first and second. Third has got extended as well as broad spectrum of activity. तो इसकी क्लासिफिकेशन के फिर हर एक के अपने अपने वो थे। Mechanism that we have I've just repeated over here. फार्माकोकाइनेटिक उसमें ये था कि उसमें जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो फिर फार्माकोकाइनेटिक भी वहां पे आ जाएगा, कंपैरिजन आखिर में करते हैं। और रेजिस्टेंस वाज रिलेटेड टू 3 मेजर मैकेनिज्म, आइदर पेनिट्रेशन इज नॉट अलाउड, आइदर दी cephalosporin आर बीन kick out from that bacterial cell through efflux mechanism, or there is modification at that beta at that transpeptidase enzyme for binding by those cephalosporin. तो या बाइंड नहीं कर सकते, या पेनिट्रेट नहीं कर सकते, या इफ्लेक्स कर जाते हैं। और चौथा फिर ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे वाइड मोस्ट अक्रिंग है, वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम का मौजूद होना है या प्रोड्यूस होना है। तो वो बीटा लैक्टामेज जो है वो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देते हैं, तो उसकी एक्टिविटी फिर खत्म हो जाती है। कम टू टुडे वी हैव टू today's topic is related to cephalosporin to the spectrum of activity. Left side belongs to all of those main member of those groups, and right side belongs to a general spectrum of activity. So first generation, one of that is cephazolin, or second cephaloxime, cephaclor, cefoxetine, third ceftriaxone, cefotaxime and ceftazidime, and fourth includes cefepime. फिफ्थ के अभी तक नहीं है, तो फिफ्थ का मैंने आपको वजह बताई थी, बुकिश और मार्केट वैल्यू में वो है, मार्केट के लिटरेचर में डिफरेंस है। सो जनरली वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट जनरली वी हैव टू नो फर्स्ट belongs to those drugs which have got generally good activity against gram positive. सही है ना? Second belongs to all those which have got good activity against gram negative. तो पहला का फर्स्ट जनरेशन की अच्छी एक्टिविटी किसके खिलाफ है? ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ है। सेकंड की अच्छी एक्टिविटी किसके खिलाफ है? ग्राम पॉजिटिव की है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा किसकी है? ग्राम नेगेटिव के खिलाफ है। अच्छा, और थर्ड जो है दैट इज वाइडली वर्किंग फॉर ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज फॉर ग्राम नेगेटिव, सिमिलरली फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन फोर्थ, फिफ्थ
और थर्ड में डिफरेंस जो है वो बाज एरोबिक एनारोबिक का है, otherwise spectrum of activity is not that much significant related to gram positive and gram negative. तो बस ये बात याद रखें, फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव ज्यादा है, सेकेंड जनरेशन ग्राम नेगेटिव ज्यादा है, थर्ड जनरेशन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है लेकिन उसमें बाज स्ट्रेन जो है वो रेजिस्टेंट है बिकॉज ऑफ बीटा लैक्टेमेज. And for that fourth and fifth, that has got wider most spectrum of activity regardless of aerobic or anaerobic. Over here we have to see for the detailed spectrum of activity of each group, of each generation. First generation, these cephalosporin are active against gram-positive cocci, some gram-negative bacteria including E. coli, Klebsiella, Proteus, and some anaerobes. Inactive against Pseudomonas, and they are used in UTI, bronchitis, and minor infection. Second generation, वैसे ये तो इधर लिखा हुआ है लेकिन जो जनरली है फर्स्ट जनरेशन आमतौर पे सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए है. सुपरफिशियल इन्फेक्शन मीन स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज के लिए है. Second generation cephalosporin, they are effective against organism affected by they are also against that can be responsible to control by first generation as well as, but they are more effective against gram negative, including H influenza and some other Frigalis. They are inactive against Pseudomonas. Pseudomonas के लिए क्यों inactive हैं? Because of those sporine, these cephalosporin are not allowed to penetrate properly. Pseudomonas में ये problem है. They can be used against beta lactamase producing bacteria anaerobes. इसी वजह से जो ग्राम नेगेटिव हैं उनके खिलाफ इनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन cephalosporin. Third generation cephalosporin, these drugs provide extended coverage against gram negative organism, and most of these reach CNS. They are also active against Pseudomonas and some other Neisseria strain. Cephtaxime and some other are also active against Frigalis. Fourth and fifth generation are more active against beta lactamase producing bacteria. It has good activity against Enterobacter and aeruginosa. Similarly for Staph aureus and pneumoniae. Clinical uses: septicemia, mainly related to spectrum of activity by cefuroxime and cefoxetine. Pneumonia due to some susceptible organisms, meningitis, ceftriaxone and cefotaxime related to its CSF distribution. Ceftriaxone और cefotaxime जो है उनकी bioavailability into meninges by crossing CSF ज्यादा है as compared to other members, and for that reason meningitis can be treated by these two members more as compared to other members. Biliary tract infection, urinary tract infection, sinusitis. These are 6 major, but they are not excluded only. We also have got some other areas that can be treated by these cephalosporin. जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट जनरेशन आमतौर पे जो है वो स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन के लिए है, और सेकंड जो है वो आमतौर पे डीप टिश्यू और बोन्स इन्फेक्शन के लिए है. तो जो भी वो है एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के लिए है. ठीक है, तो जो भी है सर्जिकल प्रोफाइलेक्टिक सर्जिकल यूज भी है और पोस्ट सर्जिकल इंडिकेशंस भी हैं रिलेटेड टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज ससेप्टेबल फॉर दैट मेंबर ऑफ cephalosporin. तो हमने कहा कि जगह और इन्फेक्शन के साथ नहीं है बल्कि इन्फेक्शन के कॉजेटिव एजेंट के साथ हमारा काम है. वो जहां पे भी हो और वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर जाए, उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हो, तो वहां उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ अगर वो है सेंसिटिव है, वो ऑर्गेनिज्म उस मेंबर के लिए सेंसिटिव है, तो फिर आप उस cephalosporin को इस्तेमाल कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन. Adverse reaction, we have got hypersensitivity, gastrointestinal, hematological disorders. We got renal impairment, central nervous system, false positive laboratory related to glucosuria, and some related to disulfiram type of reaction. Hypersensitivity rash
urticaria, serum sickness, and anaphylaxis. Rashes percentage पे तो नहीं जाते. Generally, we can see for rashes that are more prevalent as compared to anaphylaxis and serum sickness. Gastrointestinal include diarrhea, nausea, vomiting, transient transaminase elevation, and important is that superinfection. You know what is superinfection mean? तो जो सुपरा इन्फेक्शन है या सुपर इन्फेक्शन है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है जहां पे भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं. थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन अगर ज्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे तो सुपरा इन्फेक्शन के चांसेस पे ज्यादा होंगे. जीआईटी की बात कर रहा हूं. हेमाटोलॉजिकल इंक्लूड eosinophilia, neutropenia, and other type of hemolytic anemia. We have discussed that we got antigenic type of activity by the cephalosporin. They will have to be provided with antibody, and phagocytosis take place by phagocytosis of RBC take place by normal physiological immune system. Renal interstitial nephritis. Central nervous system include seizure, mostly related to those drugs if they are given for longer time and they have got wide distribution into CSF. We will discuss that in coming slide, which member have got wide distribution as compared to others. एक इसमें important है डाइसल्फिरैम. डाइसल्फिरैम जो है वो अल्कोहल टॉक्सिसिटी में हम इस्तेमाल करते हैं. डाइसल्फिराम टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो जब अल्कोहल टॉक्सिसिटी होती है तो अल्कोहल टॉक्सिसिटी को हम ट्रीट करते हैं डाइसल्फिराम से. दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरफेयर फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म. नाउ इफ दिस डाइसल्फिराम is given, most of the cases, one of that initial step of alcohol that is being inhibited to be proceeding to its other step. अल्कोहल जो है वो 3 स्टेप के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस का नाम है. अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड. तो ये 3 स्टेप जो हैं वो अपने तौर पे अल्कोहल जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है फॉर इट्स टॉक्सिसिटी. अल्कोहल अपने तौर पे टॉक्सिक है एज अल्कोहल, और एसिटल्डिहाइड अपने तौर पे टॉक्सिक है एज अल्डिहाइड, और एसिटिक एसिड अपने तौर पे टॉक्सिक है एज एसिटिक एसिड. तो यहाँ पे जो डाइसल्फिराम है, that is responsible to interfere that enzyme which is responsible for conversion of alcohol into acetaldehyde and acetaldehyde into acetic acid. Now that is mostly related to some symptoms characteristic associated to that disulfiram, which is responsible to inhibit biochemical conversion of alcohol into corresponding metabolites. तो फिर आमतौर पे वो फ्लशिंग होती है और क्या कहते हैं बॉडी बैलेंस खराब हो जाता है और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं. That's related with the disulfiram. So you can expect for chronic use of second and third generation of cephalosporin, disulfiram related type of symptoms can be seen. ये कंपैरिजन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफलोस्पोरिन का. देखें ड्रग first generation, second generation, third generation, and fourth generation. This drug for route of administration, orally कौन से हैं? Cephalosporin और Cefaclor, और दूसरे जो हैं Cephalosporin और Cephradine that are parenterally administered along with that oral. Cephazoline भी वो है. Forget about oral and parenteral. Anti-microbial spectrum is important. We have got gram-positive. Most widely is associated to this one, first generation. First generation की सबसे ज्यादा activity है as compared to second. Third generation nowadays members are being extended for working against gram-positive as well. Gram-negative में सबसे ज्यादा जो है वो third और second है. तो first की gram-negative में कम है, second और third की gram-negative में ज्यादा है. Anaerobes effective against oral cavity anaerobes, but that is related to more effective by second generation and more effective in third generation.
बीटा लैक्टेमेज एंजाइम सेफलोथीन जो है वो हाईली रेजिस्टेंट है फॉर स्टेफलोकोकल बीटा लैक्टेमेज एंड सेफॉक्सिटीन सेफोरॉक्साइम आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से फिर इसकी ग्राम नेगेटिव की एक्टिविटी भी ज्यादा है क्योंकि वहां पे फिर उसकी रेजिस्टेंट जो है वो ज्यादा है अगेंस्ट बीटा लैक्टेमेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव। मोस्ट ऑफ देम आर हाईली रेजिस्टेंट। लेकिन ये डेटा थोड़ा पुराना है। आमतौर ये जो मोस्ट की जो बात है आजकल जो है वो मोस्ट का लफ्ज खत्म हो गया है। सम मेंबर्स आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट बीटा लैक्टेमेज दैट बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन। अच्छा ये जरा तवज्जो दें। Those member of first, second, third, and fourth that can cross blood-brain barrier. First, do not cross. Second, some of the member may cross. ठीक है? Third generation and fourth generation mostly can cross. I've told you ceftriaxone, one of that member that can cross blood-brain barrier. तो इसकी बुनियाद पे CSF की concentration ज्यादा होती है. Cefotaxime and ceftriaxone, these are two members that can cross CSF more widely as compared to first and second generation. Second, uses first generation are mostly used as I've told you in skin and soft tissue infection, and that can be used for surgical prophylaxis. Cephalosporin is preferred because of its longer duration of action as compared to first. Second have got more activity in anaerobe infection related to abdominal as well as pelvic area. Respiratory tract infection, for those we have got oral cephalosporin. And third, that has got wider spectrum of activity and that can be used in a variety of infection related to those areas. This may be urinary, this may be respiratory, this may be soft tissues, and some gonococcal type of infection, typhoid fever, meningitis, and septicemia. आपको मेरी आवाज